and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra, and this is where we get you all the action on the Lal Street, as well as all the queries that you have about the stocks in your portfolio get answered over the next 50 minutes here. Of course, if in case you're joining us afresh, WhatsApp number is on your screens. Send me all your questions about the stocks in your portfolio or on your radar. Of course, you can mention your own name, location, and contact details. We can give you an option to also speak live to our top market experts to get a custom-made advice on the program. Now, in case you are with us on our YouTube channel, Business Today, then go to Daily Calls Live, use the comment section there to send me your questions. I'll be happy to address that with our top guests as well. But let me quickly look at how the markets are shaping up. 24,172. There is a 66 point of a cut on the Nifty right now. Clearly some more pressure building up from the financials today. PSU banks, which were bucking the trend in yesterday's trading session, has now come under pressure. You can clearly see the index now hovering near the day's low point. About 0.7% of a cut can be seen on the PSU banking index. You're also looking at private banks, financial services also, dragging the Nifty bank overall. The IT stocks are also 0.3% lower in the session. So two of the biggest heavyweight pockets, IT and banks, they are both contributing to the sentiment on the lower side. Slight gains can be seen on the real estate pack. Broader markets also up into the green, just about 0.2% of an up move. You're looking at the metal space also that is just about 0.1% higher in the session. Let's actually welcome our guest on board. We have Rupak De, the senior research analyst at LKP Securities, joining in with a fresh take on the markets. Welcome, Rupak. Your sense on the markets right now and how is it likely to pan out? After starting on a safety footing, Nifty has fallen by about 100 points. But what I find in the latest chart, Nifty is taking support around its important moving average on an intraday chart. So I think there might be a chance that Nifty might recover. Nifty might give a meaningful recovery on an intraday basis, and on the higher end, it might recover towards 24,400. So I am expecting a recovery given that it is holding above 24,150. So support is at 24,150, and on the higher end, it might go towards 24,400. Okay. Let's also try and understand on the real estate space. Are you looking at some more uptick coming in? Today, the sector is the top performer amidst this otherwise very muted set of trade that's panning out to be. Your sense on the real estate sector? So I think the real estate sector might witness recovery from here. I think after a few days of downwards consolidation, the index is ready for a recovery towards 1,000. And on the lower end, support is at 880. Till the time it is remaining above 880, I think space is looking good. Okay, let's start taking some questions now. Rupak, we have our first question coming into you from Bangalore. This is Naveen asking you on CDSL, and he says, I have about 1,400 shares as my buying price. 1,435 is my buying price. About 290 shares is what I hold. I want to know whether I should continue to hold on or to exit the current stock. So he bought it at 1,435. Currently the stock is at 1,367. He's been seeing some pressure build up. Do you see any kind of reversal on the charts, or will it take time? What would you advise? So recently, the stock has fallen below. In fact, today the stock has fallen below its important moving average, and I think the correction might extend in the short term. On the lower end, 1320 might come in the near term. So I would suggest to hold the stock with a stop loss of 1360. Below 1360, I think exit would be a better strategy. Okay, let's take the next query. This one is from, again, one of our viewers, Sumedh Lakhar. He says, I'm a regular viewer of Daily Calls. Thank you, Sumedh, for writing in. He says he has a question on whether he should make a fresh investment in Canara Bank and Canara HSBC life insurance stocks. He's planning to buy both of these and would appreciate your guidance here. For Canara HSBC Life, we've seen a smart uptick today after the Q1 numbers have actually come in. After the recent listing, the stock is now finally on an uptrend. You can see about an 8 to 9% of a move coming in as a strong reaction to the earnings. Remains to be seen whether this momentum can continue going forward. And between Canara Bank and Canara HSBC Life, where would you advise a fresh purchase?
So Canada HSBC Life is looking very good on chart. It has given a significant breakout on the chart. I feel the stock might move towards 180, even above 180 it might go in the near term. So investing into this stock would be a better idea than investing in Can Bank. Can Bank is looking very average on chart. I expect the stock to struggle in the short term. So Can Age Life would be a better investment as compared to Canara Bank. Okay, let's take the next query, and this one is from Avdish Kumar Thakur, one of our other viewers on our WhatsApp, who says, please help me with the Valiant Organics share that I have in my portfolio, and I have a medium term view. What is your target for Valiant Organics, and do you advise continuing to hold on? 315 पर इन्होंने लिया है Valiant Organics का share. Do you track this? No, I'm not finding the stock. Okay, you're not unable to find the stock. Okay, we'll take his second question. His second question is on Vishal Mega Mart. Do you track this one, and can you give a medium-term view on Vishal Mega Mart? So I don't track the stock, but I had the chart of the stock. So currently the stock is trading around 111, and the stock doesn't have any trend either on the upside or the down or on the downside. But we should hold the stock with a stop loss of 110. Below 110, I would suggest to exit from the stock. Okay, let's take some questions on our YouTube. Also, a lot of our fresh viewers are joining in on the program. We have Anuj, Rishikesh, Shomalia joining in. Welcome to all of you. Praveena also is here. We'll start taking some of your questions too. Anuj says, Supriya Life Sciences का शेयर उन्होंने 548 के रेट पर लिया है, 500 शेयर्स हैं. एक साल तक का टारगेट क्या हो सकता है? रूपक आपसे पूछना चाहते हैं. जी सुप्रीम इंडस्ट्री का टारगेट मुझे लगता है सुप्रिया लाइफ साइंसेस आज 2% ऊपर है. ये 855 पर है और इन्होंने 548 के रेट पे लिया है, यानी कि अच्छे खासे प्रॉफिट में है. अब क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करना चाहिए. 830 का स्टॉप लॉस होगा. 830 अगर गया तो एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो होल्ड कर सकते हो. ऑन रिकवरी आई थिंक 880 तक जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये सवाल हमारे पास आया है ऋषिकेश का. लिखते हैं, हाय साक्षी, आई हैव अपोलो माइक्रो शेयर्स एट 450. आई वांट टू नो विल देयर बी मोर डाउनसाइड टू द स्टॉक एंड प्लीज गाइड विद द स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑन अपोलो माइक्रो. नाउ द थिंग विद अपोलो माइक्रो इज अगेन द स्टॉक हैज हैड अ गुड रन अप in the recent past. Now it's coming under some consolidation. Now 383 can be seen as the current price. You bought this at 450, which means that it's constantly on a downward trend since the time you bought this. So let's try and understand what is the way out. Rupak. The chart looks a bit risky. The stock has fallen back below its 21 days exponential moving average on the daily time frame, and currently it is challenging 50 days moving average. So I would suggest a stop loss of 380. Hold the stock with the stop loss of 380. Below that, exit. Okay, let's take the next query, and this one is from one of our viewers again. This is Vidya Sagar on our WhatsApp, who says, I'm holding 1000 shares of Lloyd's Engineering. My price is just 13 rupees and I want to know, I can hold on for the long term, but would you advise me to continue to hold on with my position on Lloyd's Engineering, and what is the advice for the long term targets that you can expect here on Lloyd's? So the stock has given a consolidation breakout on the daily chart, and on the monthly chart it has given previous swing high breakout. Stock is looking very good. It's a good hold with a stop loss of 80 rupees. Till the time it is remaining above 80, there is a chance that the stock might move towards 110 in the short to medium term. Let's take the next one. This one is from Deepak Patel, who says, hi Sakshi, please suggest to me on Sri Lotus Developers. I have this stock in my portfolio at 150. 200 shares is what I have. Should I hold on or book my loss right now? Although I'm a long-term investor, but I want to know whether this stock will recover and give me gains going forward. Sri Lotus Developers. Do you track this stock? The stock name is Lotus Developer, right? Correct. It's at 140 or around that level right now, and our viewer Deepak got this at 150.
wants to know whether it's time to already book losses or should one hold on? Exit would be better strategy as the stock has fallen back below its important moving average and the stock might witness further correction from here. So exit the stock and you might re-enter above 143 only. Okay, let's take the next query. This one is from Shomalia Biswas. He's from Kolkata and he has a technical question for you, Rupak. He says, I have six lots of Nifty for 28 July expiry. 24,200 call option is what I have at 167. Is there a suitable target and stop loss that you can guide him for this option? What should he be doing? Should he hold on or not? For 28 July expiry, 24,200 call option at 167, 6 lots. So I think he should continue holding the stock. I expect a strong recovery from here. The stop loss I would suggest to place below 132. Below that, it might fall further. But on the higher end, I expect the option to rise towards 125 in the near term by tomorrow. Okay. Let's take the next query. Ankur Modi has the next question. Says, hi Sakshi, hope you're doing well, very well. Thank you so much for asking, Ankur, and I hope the same for you too. The query that he has today is on CAMS. At the current levels, he says it has definitely fallen a lot from its high levels. So is this the right time and the right price to enter into CAMS? And since it has a strong business monopoly, can it be accumulated in a staggered manner for the next 3 to 4 years as well? जब भी हम म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते हैं, कैम्स का नाम डेफिनेटली सबसे पहले आता है क्योंकि बहुत लोग इसे अपना प्राइम तरीका समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं म्यूचुअल फंड्स के एक ही जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाते हैं कैम्स पर. कैसे देखते हैं आप कैम्स को? जी, चार्ट इसका अच्छा है. मुझे लगता है कि रिकवरी आना चाहिए मीडियम टर्म में. तो डेफिनेटली स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर ए टारगेट ऑफ 950 ओवर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म. और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना है 720 पे, जिसके नीचे वीक हो जाएगा स्टॉक. ओके, गॉट दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ. ये सवाल हमारे पास आया है अथर्व का, अथर्व बैनर्जी. लिखते हैं, सर आधार हाउसिंग फाइनेंस आपको कैसा लगता है? 530 पर मैंने खरीदा है. इसके अलावा इंडियन बैंक पर भी इनका सवाल है, 870 पर ये भी खरीद है इनकी. तो बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही कंपनीज पर फोकस है. आधार हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल 514 पर चल रहा है, खरीदा इन्होंने 530 पर था. इंडियन बैंक की इनकी खरीद है 870 की. जी, अदर हाउसिंग फाइनेंस का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट पे, बट थोड़ा फॉल्टरिंग कर रहा है. तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 500 नहीं टूटा तो एक चांस है कि 600 तक शॉर्ट टर्म में जाए, तो होल्ड. और दूसरा इंडियन बैंक, जिसका इस चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है जनरली, और रिसेंट चार्ट मैं देखता हूँ तो रिसेंट चार्ट भी बहुत बढ़िया है. और stock has found support around its important moving average. Hold the stock with a stop loss of 814. ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं एक और सवाल, और ये सवाल हमारे पास आया है अगेन व्हाट्सएप यूट्यूब व्यूअर से. सत्या है जो कि लिखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी होल्ड किया है 130 पर. क्या इसे एवरेज करना चाहिए या फिर अभी फिलहाल निकल जाए इस कंपनी से? क्या सजेशन होगा आपका आईओसी में? देखा जाए तो पिछले 6 महीने में ऑयल एंड गैस स्पेस के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया वॉर के चलते क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसका सीधा इम्पैक्ट हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर देखा है. अच्छी बात यह कि इन्होंने 130 पर लिया है तो प्रॉफिट में तो ये आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि टेंशंस एक बार फिर से सेंटर स्टेज ले चुकी है. ऐसे में इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर. तो क्या ये सही समय है, प्रॉफिट जितना भी हो रहा है वो लेकर निकल जाए, या फिर अभी भी बने रह सकते हैं चार्ट्स पर? मुझे लगता है बने रहना चाहिए, एक छोटा रिस्क लेके. एक रिस्क जो है 139 का रिस्क लेके बने रहना चाहिए. ओके, रिस्क लेकर आप बने रह सकते हैं. आपको यहाँ पर बेहतर आउटलुक देखने को मिल सकता है आगे. कोई जल्दबाजी नहीं है अभी प्रॉफिट लेने की. फिलहाल ये राय है रूपक की आपके लिए. सिद्धार्थ है नोएडा से जो कि लिखते हैं, 90 शेयर्स त्रिवेणी टर्बाइन के हैं इनके पास 620 के भाव पर. पूछना चाहते हैं व्हाट टारगेट
can I expect in the next 3 to 4 months? So it has a support at 610. Till the time it is remaining above 610, there's a possibility that the stock might move towards 640, 660 in the near term. So hold the stock with a stop loss of 610. ओके चलिए यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस के साथ बताया गया है कि आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है गुंजन की जयपुर से, टानला प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूछना चाह रही हैं। 546 के भाव पर टानला प्लेटफॉर्म्स का शेयर होल्ड करा है, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखें और इसका टारगेट क्या हो सकता है, दोनों पूछना चाहती हैं आपसे कि क्या बने रहें। 569 पर है, प्रॉफिट्स में है ये, और टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें। जी चार्ट अच्छा है, स्टॉप लॉस 560 का डाल के होल्ड कर सकते हो आप। ऑन रिकवरी 600 630 तक जा सकता है। Okay, let's take Ravi Kalra's question next. He's from Delhi. He says, good afternoon, Sakshi. Good afternoon to you as well, Ravi. He says, I have got 1,000 shares of Senco Gold at 362. And I want to know what is the outlook on this stock for the next 6 months. And what should I do with my position currently in Senco? So the good part is you're in profits of about 12 odd rupees per share on your current holding. And we are again seeing that we are entering into the festive season soon. That's when usually the demand for a lot of gold related purchases rises during festive season, and even the wedding season is coming up. And now that the prices have cooled off from the peak, there is heightened chance that the demand improvement can be seen in the coming up festive season. Your sense on how should one be approaching Senco Gold? The chart looks good, and it has a support at 360, and there's a high chance that the stock might continue moving towards the higher level. 410 should be next target, and a stop loss should be placed below 360. Okay. Next, let's take another question, and this one we'll take from our YouTube viewers as well. A lot of them are joining in afresh on our channel. Jatin Dave says, hi, Sakshi ji and Rupak ji, good afternoon. Please help me with a fresh buying price for Hindustan Aeronautics, HAL. 1 साल के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं HAL को, क्या इसमें खरीदारी का समय आ चुका है? देखा जाए तो पिछले 6 महीने से आसपास से ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है HAL, और बहुत ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस जिससे जो एक्सपेक्ट करी जा रही थी, क्योंकि ये नंबर 1 बिगेस्ट कंपनी है अगर डिफेंस क्षेत्र की, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस तो नहीं दिखी है। खैर पूरे सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो HAL में अभी क्या कर सकते हैं? जी करंट लेवल पे बाय कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 3 महीना का मैं चार्ट देखता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, तो देखता हूँ कि 21 मंथ्स का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो होल्ड कर रहा है। पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अभी बाय करना चाहिए सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए। एक स्टॉप लॉस मैं बताना चाहूंगा, वो रहेगा स्टॉप लॉस 4150 का। Okay, let's take another query, and this one is from Raj, who says, hi Sakshi, I feel stuck in DAM capital after buying near the all-time highs. Should I exit and switch my position? Which stock should I switch my position to? Can you please help me with the guidance? For sure Raj, we'll help you out. DAM capital में इन्होंने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास खरीदारी कर ली, जिसके बाद यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। आप पूछना चाहते हैं क्या करें, निकल जाएं, किसी और में स्विच करें या बने रहें? जी देखिए, आफ्टर सिग्निफिकेंट करेक्शन मुझे लगता है कि इस लेवल से एक मीनिंगफुल रिकवरी आना चाहिए। स्टॉक को मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट टू मिड टर्म में 210 220 तक जाते हुए तो होल्ड करना चाहिए, बट एक स्टॉप लॉस डालना है 155 पे। ओके चलिए, यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये सवाल हमारे पास आया है दीपक का। ये आपसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। 4000 पर खरीदा है इन्होंने, होल्ड करें या सेल करें, ये आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। करंटली आई थिंक 6% ऊपर है ये, ऑलमोस्ट 4500 4600 के आसपास आ चुका है। प्रॉफिट्स में है ये, अभी क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंट सर्ज हुआ है रिसेंट प्राइस में, तो बट मुझे लगता है अभी भी प्राइस रैली बाकी है। 4800 5000 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 4300 के नीचे, और होल्ड करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सवाल लेते हैं मयंक का। ये भोपाल से हैं
और आज ही लिस्ट हुई कंपनी के ऊपर इनका सवाल है, यानी कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में इन्होंने निवेश किया है और 400 शेयर्स इनके पास हैं। अब पूछना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या बने रहना चाहिए या नहीं। तो मैं डेफिनेटली एसबीआई फंड्स में आज आपको 7-8% तक का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इंडिकेट कर रहा था शायद 18 से 20% तक की तेजी आ सकती है, लेकिन उस तरीका का मूव पहले दिन पे नहीं आया है। और अब आप पूछना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपको इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं। रूपक, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स तो आपके पास है नहीं, लेकिन क्या एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से कोई भी आपने राय दी है क्लाइंट्स को जो आप शेयर करना चाहेंगे मयंक को? जी, हमारा कवरेज साइड इसके ऊपर नहीं है और चार्ट के हिसाब से भी कुछ रेकमेंड नहीं कर सकते अभी। Okay. Unfortunately, our guest cannot advise you, Mayank, but we'll try and address it with a fundamental expert. So come up with your question next whenever we have a fundamental guest coming in on the program. We have Lavisha's question next. Jalandhar से हैं ये। Inox Wind के ऊपर सवाल है इनका। 100 शेयर्स 100 के भाव पर खरीदा हुआ है। एवरेज कर सकती हैं अभी करंट लेवल्स पर या नहीं, ये आपसे जानना चाह रही हैं। और आउटलुक क्या देखते हैं आप आइनॉक्स विंड में? रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस का एक स्टॉक है जो कि विंड एनर्जीज में काफी काम करता है। आइनॉक्स विंड कैसा लग रहा है आपको? जी, चार्ट पे खराब ही लग रहा है, बट एक रिकवरी के उम्मीद है। 77 का स्टॉप लॉस रख के आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा बिलो 77। Okay, let's take the next query, and this one is from Gopi Krish, who says, I want to know about Canara Bank. I have this stock at 123 in my portfolio. 4,000 shares is what I have. How would you advise? In fact, Canara Bank के ऊपर हमने already advice लिया भी है, तो हम इनका दूसरा सवाल लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। 3,750 शेयर्स हैं 243 के भाव पर। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कैसा लगता है और आगे जाते हुए किस तरीके के यहाँ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये पूछना चाहते हैं आपको। 249 पर ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि 7-8 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है अभी। कि मुझे लगता है प्रॉफिट एक बार बांध लेना चाहिए, क्योंकि इसका मीडियम टर्म चार्ट थोड़ा वीक है, बट एकदम वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट में स्ट्रेंथ था, बट आज का दिन एकदम सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया। तो मुझे लगता है प्रॉफिट बांध लेना चाहिए और एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक से एक बार। Okay, let's take the next query, and this one is from Jay from Tirupur, who says, is it the right time to enter Geo Finance at this price? I have a 1-year time frame. Geo Finance NBFC space से कैसा लग रहा है अभी आपको? काफी लंबे अरसे से ये कंसोलिडेट करता चला जा रहा है स्टॉक, और अब क्या आगे जाते हुए आपको कहीं पर चार्ट्स में नजर आ रहा है कि ये शेयर 1 साल के नजरिए से बढ़िया रिटर्न दे सकता है? जी, डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक। मुझे लगता है और बाकी है, करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, तो स्टॉक को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं अभी आप, फिलहाल इसमें अभी एंटर करने का सही समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और हमारे दर्शक हैं जो कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए, और सवाल हमारे पास आया है राजू का ड्रेजिंग कॉरपोरेशन पर। ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुका है, लिखते हैं हैज़ इट एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म accumulation zone or would you wait for a better margin of safety to enter into this stock? How would you view the charts currently, Rupak, and dredging corporation, what would you say? तो मुझे लगता है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में करेक्शन और इंटेंसिफाइड हो सकता है, बट वो करेक्शन में मुझे लगता है लिमिटेड रहेगा 960 तक। तो नीचे थोड़ा डीप मिले तो पोजीशन बनाया जा सकता है। All right, okay. Let's take the next query, and this one is from Sumit Ghosh, who says, "Hi, Sakshi and hello Rupak जी, मैं कोलकाता से हूँ। डिलीवरी के शेयर्स हैं मेरे पास 481 पर। शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है डिलीवरी को लेकर?" जैसे कि डिलीवरी का चार्ट पे, लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था, बट थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा करेक्ट किया, बट अभी भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। 477 का स्टॉप लॉस डाल के आप होल्ड कर सकते हो। अगर नहीं टूटा 477, एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। Okay, let's take Manoj Gupta's question next. He lives in New Delhi and he says, I'm holding ITC hotels at an average buying price of 181. Even though the company has posted strong quarterly numbers recently with a 36% jump in the net profits, the stock has faced immediate price correction and pressure, currently trading around 166 or 172. Should I continue to hold this for the long term or exit at a minor loss? What would be the outlook on ITC hotels? Yeah.
So I think exit would be better idea because it has failed to sustain above its 200 days moving average and fell back to below Hmm. its short-term moving average as well. So exit from the stock and wait for further correction. Okay, let's also take one more question, and this one is from one of our viewers. This is Satyan. He says, I want to know about Vedanta. I have been holding the parent company since last couple of years. I bought it at 460. After the demerger, I have also got 4 other companies. Now I have all the companies in my portfolio, and I want to know whether it is advisable to hold on to these companies for the long term, all these 5 stocks as core portfolio stocks. Again, you would not have charts of all the newly listed companies from Vedanta, but most of them have actually done decently well after getting listed. Your sense on how would you advise? So Vedanta limited chart is looking a bit good for the very short term. I think a short term pullback might be there, but one should hold the stock with a stop loss of 247. Below 247, I would suggest to exit from the stock. Okay, I hope that this has advised you well. We have the question coming in from Swati Yogeshwar. She says, Daily Calls is a great show. Thank you so much, dear Swati, for writing in warm words for the show. She says, I want to know about Autoline. I got this stock at 96. Should I hold or average, and what kind of targets can you advise? Currently, Autoline Industries is trading at 87, but in the past 5 days, it's dropped by about 8 to 10 odd percent. In the last 1 month, it had moved up about 8 odd percent. Last year to date levels show you just about a 9% up move, and last 1 year it's moved up about 12 odd percent. There was a considerable amount of pickup that happened from 54 odd levels that was seen in March of 2026 all the way up to 95, 96 odd levels. If you have bought it just recently and from that you have seen a decline, then we'll try to help you out whether those levels can be seen again. What would you advise, Rupak? The chart pattern is looking good with a heart of high bottom formation, but one should stop loss. They should place a stop loss at 83. Below 83, I would recommend to exit from the stock or at least reducing significant position from the stock. Okay, and towards the end, Rupak, why don't you help us with your own top research stock ideas that you can advise to all our viewers as well in this current market? Have you spotted any stock ideas where you can suggest a buy or a sell? So today, some financial stocks are looking good. Like Manappuram Finance is one stock which I would like to share. The stock has given a falling consolidation breakout today, and also it has moved above its previous swing high. I expect the stock to move towards 360, 370 in fact, and on the lower end, a stop loss should be placed at 337. Another call would be Pro. The stock is in uptrend, and I expect a significant up move in any time in the near term. So it is trading around 1614. I expect the stock to rise towards 1720, and a stop loss will be placed at 1600. Okay, so you talked about Manappuram Finance. That's something that you can definitely be looking at. The second one is Senco Gold. Are you talking about that or something else did you do? Nelco? No, Pro. Pro is Came India Project Limited. Canes India. Came India. Okay, I Yeah. hope that, okay, fine. So I hope that we can also pull up that stock. This Canes India. I hope we can pull up that stock. We have only Canes Industries. Is there something else that you're talking about? No, it's Came India, CEM India. Short CEM. CEM Pro, PRO. Sempro India. Okay. Right. Sempro India. That's the stock that you're talking about. So those are the two stock ideas, viewers. First one is Manappuram Finance, and this second one is SEM India Projects. Sempro is the quoted price or the quote on the NSE you will find. These are the stock ideas that Rupak believes you can definitely enter at the current levels, and you will find a decent upside there. Thank you so much, Rupak, for your time on the show and for advising all our clients and viewers as well.
All right, we'll move forward and get into the second segment of the program, viewers. We're looking at the halftime trade again pan out to be consolidative. 24,176 continues on the Nifty. There's a 61 point of a drop that you can constantly see as far as the Nifty is concerned, but the pressure that continues to